Hi dear students, welcome back to the next chapter, which is chapter number 5, Mr. Simple on the train. What do you understand by this? जो Mr. Simple हैं, एक मैन है, उनका नाम है Mr. Simple और वो कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं. So we are going to learn something new about him, something new in the chapter. So let's see. Let's begin. Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. He would check the 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. अब जो मिस्टर सिंपल हैं वो मंथ में एक बार once in a month he used to visit his mother. वो कहाँ जाते थे? अपनी old mother के पास जाते थे. He would कैच द ट्रेन. कौन सी ट्रेन पकड़ते थे मॉर्निंग में? 10 o'clock वाली ट्रेन पकड़ते थे. ही यूज्ड टू कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड ही वुड स्पेंड द होल डे. पूरा दिन अपनी मम्मा के साथ स्पेंड करने के बाद वो वापस कौन सी ट्रेन से आते थे? ही यूज्ड टू कम बैक बाय द 6 o'clock ट्रेन. 6 बजे की ट्रेन से शाम को वो वापस आना करते थे. So this is this train. He is Mr. Simple. He is boarding on the train. Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He couldn't eat or drink anything. अब ज़्यादातर क्या होता था? Often यानी ज़्यादातर usually क्या होता था जब Mr. Simple वापस आते थे घर पे? He used to look very tired, exhausted, और ना ही वो कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे. बिल्कुल पेल, बिल्कुल थके हुए रहते थे, बीमार फील करते थे. ओके, सो वन डे मिसेस सिंपल यानी उनकी वाइफ ने पूछा, मिसेस सिंपल ने पूछा, सेड डियर, आर यू नो गुड ऑन ट्रेन जर्नी? तुम अच्छा फील नहीं करते ट्रेन जर्नी में? तुम टायर्ड फील करते हो? देखो कुछ कुछ होते हैं. देयर आर सम पीपल हु हैव फोबिया ऑफ ट्रैवलिंग इन अ बस, इन अ कार और मे बी इन अ ट्रेन. सो कुछ कुछ वैसा ही था. यूजुअली मिस्टर सिंपल जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे वापस आते थे, ही यूज्ड टू फील नॉजिया टाइप. उनको अच्छा फील नहीं होता था. यूज्ड टू फील लो, फेल फील करते थे. तो वाइफ ने पूछ लिया कि आप ट्रेन की जर्नी में ठीक नहीं फील करते क्या? इट्स अपसेट्स यू सो मच. तुम्हें कितना अपसेट कर देता है ये ट्रैवल? आई नो व्हाई इट हैपेंस टू मी. अब मिस्टर सिंपल जानते हैं कि उनके साथ ये ऐसा क्यों होता है. आई ऑलवेज फील इल व्हेन आई सिट विद माई बैक टू द इंजन. लास्ट टाइम आई सैट फेसिंग द इंजन एंड आई वॉज ऑल राइट. इजंट दैट स्ट्रेंज? But dear, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, you can end it very easily. How? Asked Mr. Simple in a surprise. When you find that you are sitting with your back to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. You can say it to him, will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. Okay, now Mrs. Simple, when she asked Mr. Simple, कि आपको ऐसे ऐसे आप अपसेट फील करते हो तो आप क्या वजह है, तो मिस्टर सिंपल ने बताया अपनी वाइफ को कि जब भी मैं इंजन की तरफ बैक करके बैठता हूँ तो मुझे बहुत इल महसूस होता है, बीमार फील करता हूँ, अपसेट फील करता हूँ. तो उनकी वाइफ ने बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बताया कि आप क्या कर सकते हो जब भी आपको लगे कि आप इंजन की तरफ बैक करके बैठे हो. जो आपके सामने वाली सीट पर पर्सन है, यू कैन tell him politely, you can ask the person politely to exchange the seat with me because I feel ill. क्या आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं बीमार फील करता हूँ मैं जब भी इंजन के साथ बैक करके बैठता हूँ. तो आप सिंपली ये सीट एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑलराइट. But I can't say that to a stranger, said Mr. Simple. He was really a very shy person. अब मिसेस सिंपल ने बोला कि मैं तो ये किसी स्ट्रेंजर से बोल नहीं सकता हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है. आई एम वेरी शाय अबाउट सेइंग सच थिंग्स. तो वाइफ ने उन्हें बहुत समझाया. शी टोल्ड हिम, शी गाइडेड हिम, शी मेड हिम प्रैक्टिस फॉर अ मंथ. पूरे एक मंथ ये लाइन बोलने की प्रैक्टिस करवाई गई उनकी वाइफ की तरफ से. मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच फॉर फुल 1 month. He knew every word of it by heart. Now I can change places with anyone, said Mr. Simple proudly to his wife. The day came when Mr. Simple was to go to see his old mother. He set off happily in the morning, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever. तो ये क्या हुआ? अब एक वो पूरा महीना प्रैक्टिस करने के बाद, वो स्पीच प्रैक्टिस करने के बाद, अब वो दिन आ गया था जब उनको अपनी मम्मा से मिलने जाना था. एंड उन्होंने वो स्पीच बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली. मॉर्निंग में तो वो बहुत हैप्पीली गए, एकदम बढ़िया, एकदम फिट फाइन होकर पहुंचे. पर जब वो शाम को घर वापस आए, दोबारा से क्या हुआ उनके साथ? वो ही पेल फेस था जैसे वो हमेशा लेकर आते थे. डियर, सेड मिस्टर सिंपल,
Oh, Mr. Simple said his wife, didn't you say that speech on the train? Mr. Simple की वाइफ ने उनसे पूछा क्या तुमने वो स्पीच नहीं बोली ट्रेन में, तुम अभी भी मुझे टायर्ड लग रहे हो. Dear, said Mr. Simple, I was quite all right when I caught the train in the morning. I got into the coach and sat down. मैं गया, मैं मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक था, मैं कोच में गया, मैं बैठा, मैं बिल्कुल सही था, मैं वहां गया, उसने मैंने पूछा. I began to feel ill, मुझे दोबारा से बीमार होना फील शुरू हो गया. Because I was sitting with my back to the engine, मैं इंजन के साथ बैक करके बैठा था. A little boy was sitting in the opposite seat. I said to him, will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. The boy at once changed the place with me and I was again quite well. Okay, बच्चे ने change कर ली थी seat. But what happened when you came back in the evening train? Asked the wife. Did you sit with your back to the engine? Yes, said Mr. Simple. How foolish, cried his wife. Mrs. Simple, why didn't you change the places with the person in the opposite seat? I would have done that, said Mr. Simple, but there was no one in the opposite seat. अब वाइफ ने बोला अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इवनिंग में भी मैं यही चीज करती कि सामने जो बैठा था मैं उससे सीट एक्सचेंज कर लेती. और मिस्टर सिंपल ने बहुत ही उदास फेस के साथ क्या बोला कि मैं सीट किसके साथ एक्सचेंज करता, मेरे सामने तो कोई बैठा ही नहीं था. ओफो, हाउ फुलिश मिस्टर सिंपल इज. ओ डियर, सेड शी, You are even more foolish than I thought. तुम तो उससे भी ज्यादा फुलिश हो जितना मैंने सोचा था. अरे जब सामने कोई बैठा ही नहीं था तो तुम वहां जाके बैठ जाते. Mr. Simple couldn't understand why his wife was saying that. That was a funny ending of the chapter, isn't it? Mr. Simple तो बहुत ज्यादा ही foolish निकले. Okay, now let's begin with the OMR sheet. Darken the circle in the options given. Mr. Simple often looked very pale when he came back after seeing his old mother. Option C. Okay, I have to use another pen. It is said only blue and black pen. Alright. C option. Next is Mr. Simple felt alright when he sat near the engine. He sat facing the engine. He sat with his back to the engine. None of the above. Felt all right when he sat facing the engine. It's B option. Next is Mr. Simple advised her husband. Mrs. Simple advised her husband to sit in the last coach of the train, to always travel by the bus, to change places with one in the opposite seat. It is D option. To change places with the person sitting in the opposite seat. Mr. Simple was very happy when he was able to learn the speech. He told his mother about the speech. He said his speech to the boy on the train. None of the above. It is C option. He said his speech to the boy on the train. C option. Fifth, Mr. Simple didn't say the speech coming back home because there was nobody in the opposite seat. कोई सामने बैठा ही नहीं था. It's B option. Let's move ahead. True, false. Write T for true and F for false. Mr. Simple went to see his old father. False. He used to go and see his old mother. Mr. Simple used to catch the morning train. Yes, true. Mr. Simple never felt shy. False. He was a shy man. On returning in evening, Mr. Simple was looking very pale. Yes, he was. True. Mr. Simple was also very foolish. Yes, he was very foolish. True. Let's see the question answer. Where did Mr. Simple go every month? He used to go and visit his old mother. He used to visit his old mother. By which train would he go in the morning? He used to catch 10 o'clock train in the morning. In the morning.
What made him feel ill? When he used to sit back to the engine. What did Mr. Simple say to the little boy on the train? Can you please change the seat? Seat with me. As I feel ill, as I feel ill, when I sit back to the engine. Okay. When did Mr. Simple come back? He used to come back in the evening. Okay, let's move ahead. Read the following 3 rules for making ly words. Okay, now this is time we are going to learn ly words, which are called usually adverbs. Just add ly as in quiet, it's become quietly. Drop the le and add ly as in able, ably. Drop the y and add ily as in angry, angrily. Now there are few rules. इट इज क्वाइट एल वाई ऐड कर देंगे तो क्वाइटली बन जाएगा. एल ई जब एंड में ई हो तो आपको क्या करना है, वाई यूज करना है, और जहां वर्ड के लास्ट में वाई है वहां आई एल वाई आ जाएगा, तो ये एंग्रीली बन गया है. ऐसे आगे वर्ड्स देखते हैं. एस ए डी सैड, सैडली. रियल, रियली. लक्की, अब वाई है लास्ट में तो क्या आ जाएगा, आई एल वाई. लकीली, के आई एल वाई. हैप्पी के पीछे क्या है लास्ट में वाई, हैप्पीली. वाई को हटा के आई एल वाई. डे, डेली. न्यू वर्ड बन गया एक एडवर्ब. इजीली, एस आई एल वाई. प्राउडली. जेंटल, अब पी एल वाई. जेंटली, ई हटा के वाई लगा दिया हमने, एल तो है ही ऑलरेडी. वाई, जेंटली. So we have done this exercise as well. Let's move ahead. Okay, words formed by joining two words are called compound words. दो अलग अलग words को join करके बनाने वाले words जो होते हैं वो होते हैं compound words. जब वो individual होते हैं तो भी उनका एक मतलब होता है, जब वो जुड़ जाते हैं तो एक नया मतलब बन जाता है. Okay, so these are called compound words. Foot यानी हमारा जो foot होता है. Ball, बॉल खेलने वाली. तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया है, फुटबॉल, यानी पैर से खेलने वाला गेम जो होता है बॉल के साथ, दैट इज कॉल्ड फुटबॉल. गोल पोस्ट, गोल पोस्ट. आर्म चेयर, आर्म चेयर. सो हेयर से मैच करना है हमें. हेयर के साथ क्या बनेगा, हेयर ब्रश या हेयर ड्रेसर. इट्स हेयर ड्रेसर. डॉग, विल डू इट अगेन नीटली. Hairdresser, dog house, time table, classmate, table clock, head master, toothbrush, breakfast. Okay. So, hair dresser, dog house, timetable, classmates,
tablecloth, headmaster, toothbrush, and the last is breakfast. Okay, so this is it. See you in the next chapter. There are many more exercises given. You have to practice them, repeat them, and learn more and more every day. Bye-bye.